Hi guys, welcome to Citizen. My name is Ketan, and the most awaited notification of JBIMS Msc Finance is now out. I am very sure you guys might have seen it, you might have heard about it, but in this video, I'm going to give you my analysis. So I'm going to try to give you a little bit of idea as to why and how you should be sort of going for it. So stick to the video. To begin with, couple of basic information as the protocol of the video. So the application starts from the form filling starts from 6th July and that goes till 20th of July. And you can start making payment from today also. I mean, 1st July ka date tha. You can start making the payment from there. The form will be open up to fill the details from 6th July till 20th of July. इसका मतलब ये है, your GDPI you can expect to happen post 25th July. मेरे ख्याल से इसके बाद में होगा. दिस इज लाइक व्हाट द अर्लीस्ट दैट आई सी. इसके बाद अगर हो सकता है मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को भी चालू हो जाए. सो द इंफॉर्मेशन इज गिवन आउट हियर. This is the payment details and all that, and you got to have these documents with you. If you go to www.jbms.edu, you can download this PDF from there. Now let's look at the important. Now, excuse me. Over here, if you look at what these guys are accepting, these guys are accepting CAT 2019 and they're accepting MHCT 2020. Fair enough. Now, they are also accepting people who have appeared for civil services like UPSC and all that. मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक लाइव लेक्चर मैंने दिया था कुछ महीने पहले. तो मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये यूपीएससी के बच्चों को भी वापस से चांस दे दे. सो दे हैव डन दैट दिस ईयर आल्सो. Okay, now let's talk about the reserve categories. Okay, let's talk about the reserve categories. यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर आ गया यार इस साल. कैट का परसेंटेज जो है 195 है. लास्ट ईयर भी 95 ही था, बट एक्चुअली इन लोगों ने क्या करा है, एमएचसीईटी का इन लोगों ने इंक्रीज करके 97 परसेंटेज कर दिया है. दैट्स द प्रॉब्लम. सो ये 97 परसेंटेज इन्होंने कर दिया सीईटी के लिए. लास्ट ईयर ये 95 था. ठीक है. सो दोज हु डू नॉट हैव 97 percentile, they won't be eligible, that's for sure. Reserved के लिए they've kept it 90 percentile in CET and they've kept 75 percentile in CAT. Again, PWD candidates 85 percentile in CET and they've kept 75 for CAT. I think यहाँ पे एक चीज हमें समझनी चाहिए कि I think JBIMS is now getting more towards CAT. See, I'm not being biased out here. I know there are a lot of people, they love CET blindly without giving it a thought or without thinking about it. But understand this, यहाँ पे अगर आप देखते हो, it's a sheer difference. It's a sheer difference, right? अब हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैट का ज्यादा है एंड सीईटी का कम है ऑल दैट. बट अगेन इफ यू लुक एट 75 परसेंटाइल बहुत सारा बच्चों को आ जाएगा. अगर मैं बात करूँ ये रेंज जो है बहुत सारे बच्चों को आ जाएगी. जहां तक 75 की बात करेंगे हम, अगर मैं लोअर लेवल पे बात करता हूँ तो ये रेंज है बहुत सारे बच्चों को मिल जाएगी ये वाली. बट नॉट श्योर कि ये वाली रेंज मिलेगी. Getting my point. तो मेरे ख्याल से they are sort of getting more towards CAT. But again ठीक है, I'm also a little disappointed कि यार यहाँ पे इन लोगों ने CET का कट ऑफ बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया. Should have given a fair chance at round about 95. Same रखना था. But ठीक है, this is something not in our hands, right? So इसको बोलते हैं PAR, which is nothing but the profile evaluation, past academic record and all that. Let's move ahead. Okay, now what do we have here is the जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी एकेडमिक्स. ठीक है. तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई 10th में 60 होना चाहिए जनरल के लिए, 12th में भी 60, 10th में 60, 12th में 60, 10th में 55, 12th में 55. दैट्स ओके. 300 बच्चों को बुलाते हैं. नाउ यू माइट फील दैट कि यार सर 300 बच्चों को बुलाते हैं, फिर मैं फॉर्म भरूं या ना भरूं. देखो यार सिंपल सी बात है, 300 बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है, पर कौन से 300 बच्चों को बुलाएंगे यू हैव नो आइडिया. मेरे ख्याल से इफ यू आर एलिजिबल फिल द फॉर्म. If you are eligible, fill the form because you have nothing to lose, to be very honest. I know 1500 rupees का सवाल है, but JBIMS जहाँ तक मैं देखता हूँ, फाइनेंस का इनका जो प्रोग्राम है, it's one of the best program that you can really trust on. कुछ colleges you can definitely leave and you can kind of go for 97 percentile पे. अगर आपको चेतना दालमिया मिलता है, MSc Finance is definitely worth joining it. You can leave Dalmia for Chetna and IES and Wellinger for that. ठीक है. So definitely, I have certain people. I have some students. Last year they left Signum and joined MSc Finance of Jamnalar Bajaj. It's a brand value that you really cannot ignore or deny. Fine. So ये है इसका फंडा. अब यहाँ पे थोड़ा सा इनका इवैल्यूएशन देखेंगे क्या चल रहा है. It's a very same thing जो last year थी. तो कॉल लाने के लिए, so to get a call you need to kind of go through this evaluation. So this is nothing but 60% weightage has been given to your written exam, which is CAT and CET and all that. 15% weightage has been given to your past academic record. 20 for work ex, 5 marks or 5% is given for gender diversity,
डेफिनेटली। अब डाइवर्सिटी की अगर बारे में बात करेंगे तो ये डाइवर्सिटी जेंडर का भी हो सकता है, ये डाइवर्सिटी योर एकेडमिक डाइवर्सिटी भी हो सकती है। सो गर्ल्स कैन सॉर्ट ऑफ टेक द एडवांटेज ऑफ इट। वर्क एक्स अगर आपको है, बिंदास करो। 6 महीने के ऊपर का वर्क एक्स है, 1 साल का वर्क एक्स है, बिंदास अप्लाई करो। इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचो बिकॉज डिफरेंस बहुत कम है। 97 से लेके 99.90 तक का बच्चा अप्लाई करेगा। बट अगेन this is not the only thing, right? This is just to get a call, and these things out here is nothing but a game changer. ये वाला जो पार्ट है वो गेम चेंजर है। लास्ट ईयर मैंने देखा है 99.50 वाला बंदा नहीं हो गया, बट 98.50 वाला बच्चा क्रैक कर गया। सो दिस इज नॉट इन टू अंडरस्टैंड। ये स्टेज 1 है, ये आपका जीडीपी का शॉर्ट थिंग है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये लोग आपको बोलते हैं कि फॉर्म भरो 1500 रुपए का, राइट? इसके बाद आप सोचोगे चलो मैं फॉर्म भरूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म का डेट खत्म होगा तब आपकी एक लिस्ट आएगी विच इज अ मेरिट लिस्ट। इसके बाद देखेंगे कि कौन से 300 बच्चों को इन लोगों ने कॉल दिया है, और वो मेरे ख्याल से आनी चाहिए 25-26 जुलाई तक आनी चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। डिले भी हो सकती है। उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। यू माइट गेट 1 or 2 days का टाइम टू अपीयर फॉर योर इंटरव्यूज। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है जो आपको लेना पड़ेगा, बट इट्स वर्थ। लेट्स मूव अहेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका कैटेगरी वाइज है। ये आप देख सकते हो कैटेगरी का जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, यू कैन गो थ्रू दिस। बट अगेन इफ यू आर समबडी who's got 95 percentile plus as far as CAT is concerned, if you are somebody who's at 97 plus for your CET, it's a best thing that you can appear for. It's a last bet. It's a last bet that you can take for your career. 1500 रुपए का सवाल है। I mean, I'm being like very raw with you guys. I'm saying this, but again, it's worth the efforts, right? Call आएगा नहीं आएगा, we don't know. The only thing that we can do is we can give it a shot. But again, अगर आपका academics बहुत ही ज्यादा कम है तो आपका work it's अच्छा होगा। There has to be something, so you can play this gamble of 1500 because number of बच्चे लोग that they are calling is quite less. Right now I'm not going to tell you that आपको खाली एक सीट वगैरह चाहिए। वैसे यार ये बात सही भी है, you just need one seat, but again यहाँ पे थोड़ी सी पंगा यहाँ पे ये होता है ना कि यार we don't know exactly ये कॉल आएगा कि नहीं आएगा, but what we can do is we can fill in the form, we can wait for it. If you get a call, then GDPI में फोड़ो। जीडी है, पीआई है, वैट है, उसमें फोड़ो। आपके चांसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो फिर और भी बेटर है, राइट? मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, टेक इट और लीव इट। ठीक है, टेक इट और लीव इट का एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट यार मेरे ख्याल से यू कैन गिव इट अ शॉट, राइट? बट अगेन इफ यू आर रियली कंफ्यूज, क्या करना है नहीं पता, यू कैन कॉल मी अप, यू कैन स्पीक टू मी, यू कैन मैसेज मी। हम वो कॉल ले लेंगे इवेंचुअली। इफ यू आर अ C2C का स्टूडेंट, joined us last year, if you have got a couple of converts, you guys are most welcome. Just drop me a message, I'll take care of it. So guys, this is the notification of MSc Finance. The next video will be on MHRD, will be up in next 1 hour. So guys, if you have any question, any queries, kindly put the comment on this video. I shall reply to all your queries. That's it from my side, guys. Thank you so much.